If you see in the last couple of years, ये जो credit card का rampage was there. Everybody used to have a credit card. अभी भी है. हर एयरपोर्ट पे निकल जाओ तो जब तक आप बोर्डिंग गेट तक नहीं पहुंचते हो तब 4 लोग आपको 500 लोग बैठते थे. 4 तो पहले हुआ करता था, अब हर कोई बेचता है. Not only अब in एक बैंक के 4 लोग खड़े होते हैं. उनका एक कियोस्क रहता है. Not only that, I have seen that in most of the shopping malls. If you go to any shopping mall, you get one kiosk of one bank and 4 or 5 people, ready to, welcome you. I've not been to a shopping mall in years now. Okay. I don't know, but I've seen it on airports. Airport is, it's a mandate because they have to be there. So then what happens? He forces the product. जिस बंदे के पास एक क्रेडिट कार्ड है और उसका स्पेंड उतना ही है, तो उसको 4 क्रेडिट कार्ड देने के क्या फायदा है? तो क्या होगा? वो I'll tell you will end up not using that. Then you will end up putting higher fees and putting CIBIL into trouble. तो क्या होता है ना, if you don't pay the card, if you don't pay in stipulated timeline, there is a penalty to it, right? Interest fee. And for example, if you forget, most of the people, they don't know how many cards they have because उनके जेब में तो 4-5 कार्ड है, तो उनको ये भी पता नहीं कि कौन सा कार्ड कब लिया था, और हो सकता है कि उनको ये पता नहीं कि किस कार्ड का वो लास्ट डेट कब है. Because you don't have the discipline, right? तो क्या होता है, वो उसके दिमाग में एक ही रहता है कि मैं HDFC का कार्ड लेता एग्जाम्पल, उसको मैंने 10 तारीख को पे करना पड़ेगा, बचाओ 2 कार्ड वो पे ही नहीं किया, तो एक दिन वो फ़ोन करेगा, वो बोलेगा सर आप पे नहीं किए क्यों, एंड दैट एंड्स अप इन सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन. इफ इज वेल इन टाइम इज एबल टू पे, वरना क्या होता है उसका सिबिल खराब हो गया. तो नाउ व्हाट हैपेंस इज सिबिल स्कोर इज गोइंग लो, ही गोज टू इमेजिन ही वांट्स टू अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, वो लोन रिजेक्ट कर देगा क्योंकि सिबिल बेकार है. सिबिल बेकार है, तो ये गेट्स इरिटेशन अबाउट दैट कार्ड, तो उसको नफरत होने लगी इसकी वजह से मेरा सिबिल्स. बट उसको ये पता नहीं कि इसकी भी दोनों की गलती है. जो क्रेडिट कार्ड बेचा ना वो एयरपोर्ट में, वो कभी ये नहीं बोलेगा क्या करना है, वो ही विल टेल ओनली द गुड पार्ट्स. सर आप ये ले लो, आपको लॉन्च मिलेगा, ऑल दोस थिंग्स. सो you end up getting a wrong information. See, for example, Amex card, everybody can't buy it. Why? There's a filter at category. So it's very clear. So who needs that and who falls into that category can be easily eligible for that Amex card. And even Amex does not have any problem to give that card. अगर मान लो क्राइटेरिया में बैठता ही नहीं है तो उसको क्यों देगा वो? They don't want to have a wrong customer in the ecosystem. Same way, this bank also should understand when they are giving any product to their customer other than a card, they should also see this. ये सही है या गलत है. So that doesn't happen most of the cases. That's where we end up seeing all these situations. And one more thing I have seen, coming to this loan lending part, see that's also big market lending. There is a overselling of that product. अभी हमारे गवर्नर ने ना, they said the same thing, right? He said I think yesterday or day before yesterday he gave that statement कि NBFC को सिर्फ ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ के लिए वो किसी को भी कुछ भी किसी भी रॉन्ग प्रोफाइल को लोन बेच देते हैं, और वो जैसे ही उनको लेंड कर देते हैं, करते जाते हैं, they don't realize that this can be harmful for our economic stability. Correct. Like that's what he meant, right? Something like this only he said. Because he's giving the speech. So there are more than I think growth at any cost is not good. See, if I'm not wrong, आज की तारीख पर एक 10,000 तो NBFC हो सकते हैं, 10,000 तो easily 9,000 to 10,000 आते हैं. एक 100 से भी ज़्यादा lending partner होंगे, digital. I'm talking about only in digital. तो इतने लोग क्या करते हैं? I do agree, we have a larger, population. They keep on selling a wrong product and they never give a clarity on the interest rates. And मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि हर कोई ये बंदा करता है, हर कोई वो करता है. But what I have seen, or it's heard and noticed, when they are approaching him for the first time, they give all the clarity. They are very kind to him to give him whatever is been asked for. As that progression happens after 1 month, 2 month, 3 month, that same is not followed. हो सकता है कि NBFC का बंदा जो भी है उससे बात ना करे. They only go for one thing, whether it's for a recovery or that repayment, but they don't tell how to use it. What are the use cases? Like on what particular date your interest rate is calculated. So these are the things which has to go explicitly. यानी कि आपको वो एक printed form पे देना होगा, उसका acknowledgement भी लेना होगा. If you see, it's a wrong thing, but you would have heard in the last couple of months, people have committed suicide and all, not paying. They're not able to pay the loans and all. Why this happened? This is very wrong, right? Means आपने पैसे लिए आपके for some need and you are not able to pay it. यानी हो सकता है कि गलती दोनों की तरफ से हो. We don't want to get into that, why it went wrong or what measures that person took. But we also need to understand somebody who is lending that amount, did he
give the clarity? Did he tell properly? These are the consequences. वो कोई बात नहीं करता है. See, for example, I'll just tell you. If you see most of the apps, these apps, they tell you, no, give your PAN card and give this thing, take a loan in 2 minutes. Very good. I'm really happy for that. But उसके बाद क्या? What are your repayment terms? But don't you think कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी इकोनॉमी में जितना ज़्यादा क्रेडिट अवेलेबल होगा, जितने ज़्यादा लोगों को, जितने ईजिली, उतना ज़्यादा बेटर होगा इकोनॉमी के लिए. बिकॉज वो लोगों की कंजम्पशन पावर, स्पेंडिंग पावर, इन्वेस्टमेंट पावर एंड ग्रोथ पावर चारों बढ़ाता है. So it's actually good, right, to for an economy. नहीं, for an तुम economy ज़्यादा point लैंड of करो view, और सही तरीके से लैंड करो, बट जल्दी लैंड करो. The cost of capital should come down. And what I also feel is lending has one more challenge here. See, you should lend more. I do agree. You need to get more capital in the market. Then only capital, the growth is possible. जब तक आप कैपिटल डालोगे नहीं तो ग्रोथ कहाँ से होगा. दिक्कत ये है कि you should not give to capital to wrong guy. And you should also look at the profile. तो क्या होता है ना, ये डिजिटल प्रोफाइल में when it comes to unsecured lending. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.